See here. So I think we ended till here about sucrose. And the important thing about sucrose that you have to remember is just one thing that it is made up of C1 alpha D glucose and C2 beta D fructose. There are two more disaccharides that we have to learn. I think you must have written about this in the last lecture, those who are present. But the next structure is maltose, and please write this down regarding maltose. Even if you don't remember the structure, that is fine, but you should remember this part. The monomeric unit linkage, it is between C1 alpha D glucose and C4 alpha D glucose. I will not make you guys remember this structure right now, but when we will be doing the revision of biomolecules, वहां पे I will give you a trick so that आप एग्जाम से कुछ दिन पहले याद करें, एग्जाम में लिखे फिर भूल जाए. Now, if I will tell you right now, then you will not be even able to practice it too many times. फिर बाद में वो आपको बताना ही पड़ेगा. So right now, don't worry about that. But हाँ, when I am doing the revision classes, at that time, you should be able to remember that maltose is made up of C1 alpha D glucose and C4 alpha D glucose. ठीक है. This also one more thing is that even if you don't remember exactly, but you should know where it is present in the notes. Notes में आपको कहाँ देखना है. ठीक है. So at least it should be either in your head or in your notes, and you should be able to find in the notes very easily. ठीक है. So please see, maltose is made up of C1 alpha D glucose and C4 alpha D glucose. Also, this give you one more information that if you are going to do hydrolysis of maltose, that if you are going to add water, then it is going to give you two molecules of glucose. This is also alpha D glucose and this is also alpha D glucose. C1 and C4, it is just telling you about the linkage. है ना, कि इसका C1 यूज हो रहा है और इसका C4 यूज हो रहा है फॉर दी glycosidic linkage. That's the only thing the C1 and C4 is saying. The monomeric unit that we are having, it is alpha D glucose and alpha D glucose. So maltose gives 2 moles of glucose only. The next is lactose. This one also you have to remember. Here also we have C1, C4, beta D galactose, but beta D glucose. यहाँ पे beta D है दोनों जगह, लेकिन galactose and glucose है. Galactose and glucose. Also write this down. Now, like, do something, make up a trick, जो भी आपको सूट करे, because it's such a simple thing जो आपको याद रखनी है. Like it is just like one line हर एक के लिए, maltose के लिए, sucrose के लिए, lactose के लिए, just one line, the thing that you have to remember. That is why develop a particular mnemonic, I would say, जिससे आपको ये याद रह सके. This is the only important thing regarding glucose, sorry, maltose, sucrose, and lactose. Sucrose, maltose, and lactose is important. The monomeric unit linkage. And also, I mean, if you remember this, then again, the same thing. If you are going to do hydrolysis, okay? If you are going to do hydrolysis, then it is going to give you 1 unit of beta D galactose and it is going to give you 1 unit of beta D glucose. तो आपको क्या मिलेगा? ग्लैक्टोज मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा. This is something that you have to remember. ठीक है. I hope you have written this down. In this summary, we have here that maltose is made up of glucose and glucose, sucrose is made up of glucose and fructose, lactose is made up of the galactose, and here we are having glucose. ठीक है. तो if you remember this part, आप ऐसे याद कर लो कम से कम. ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, galactoglucose. ठीक है. माल्टोज, सुक्रोज एंड हियर यू आर हैविंग लैक्टोज. MSL है आपके पास. अब इसको देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, you are able to remember something verbally ज्यादा अच्छे से. Sometimes there are some things that you are able to remember when it is written in the notes. जब आप उसको लिखिएगा तब आपको ज्यादा सही से याद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में बहुत बार होता था कि आपसे जब टेबल पूछा जाता था, then you would not be able to say the tables that efficiently. बट जब आप लिखते थे टेबल को तब आप लिख लेते थे. तो सिमिलरली हियर आल्सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट आप इसको याद कर लीजिए. जैसे MSL है माल्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज. माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर ग्लैक्टोज ग्लूकोज. ठीक है. इन द सेम सीक्वेंस, इन द सेम सीक्वेंस. नाउ टेल मी, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, लिंकेज बताना. C1 C4 है यहाँ पे. C1 C4. अरे हाँ या ना बोलो भाई. करेक्ट है. C1 and C4 is present now.
अरे कुछ बोलेंगे नहीं क्या आप लोग अब? दिस इज माल्टोज MSL। माल्टोज में द ग्लूकोज का यहाँ पे C1 यूज होगा और इसका C4 यूज होगा। ग्लूकोज में ग्लूकोज का यूज होगा C1 और फ्रक्टोज का क्या यूज होगा C2। ग्लाइकोटोज में यूज होगा C1 और ग्लूकोज का क्या यूज होगा C4। यहां से आपको समझ में आ रहा है कि C1 है और जो सेकंड में आ रहा है उसका C2 है इधर वाले का। ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट इन दिस वे ओनली। कैन यू प्लीज राइट दिस डाउन? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। राबिया, am I audible? Hello, Rabia. Yes, sir. Rabia, I think you're not attending the regular classes, no? For a while. Yes, sir. I missed a few regular classes. Why? What happened? Sir, actually, my school is, they have extra classes till 4, and yeah, like it takes time for me to come from school and then to home. And I think your class starts at what, like 4 o'clock itself, है ना? Yes, sir. So, like, are you covering it? Like, okay. So you have to. I think you have to attend the extra classes because it is just extension of the regular time, है ना? Or do you come back to home and then you go back No, to sir. school? I stay in school. Like You my stay. school, it's around 1:45, and the extra classes is from 2 till 4, and my house is a bit far away, so like I can't go home and then come And back. is it necessary to attend the extra classes or can come to your home? Sorry, sir. Can you repeat? Is it necessary for you to remain at school and do the extra classes? Yes, it's necessary for me. I hope you have written this down. Now let's see a question here. Okay. So this question is saying maltose is a reducing sugar which gives 2 moles of glucose on hydrolysis. 2 moles of glucose on hydrolysis. And इसमें उन्होंने बोला हुआ है maltose has 1,4 beta glycosidic linkage. Tell me guys. I think you have written this down now. Okay, yes, Rajita, you're correct. See, actually, the maltose sugar, it is not having beta linkage, rather it is having alpha linkage. यहाँ पे एक और चीज आपको मतलब लाइक इफ यू रिमेंबर इट इन लाइक MSL फॉर्मेट ना, देन आप यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं दैट बोथ ऑफ दीज आर हैविंग अल्फा लिंकेज। जस्ट अ सेकंड राइट, एक्सक्यूज मी। And this is having alpha and beta linkage, and this is having beta and beta linkage. ठीक है, so ये भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं। I think this format of remembering MSL type वाला, I think easy to remember all the three at one go only. Maltose, sucrose and lactose, alpha alpha, alpha beta, beta beta। ना इससे एक आपको रिदम बन रहा है कि अल्फा अल्फा है, फिर अल्फा बीटा हो जा रहा है, फिर दोनों बीटा हो जा रहा है। C1 C4, C1 C2, अगेन C1 C4। जो सेकंड वाला है उसमें C2 है, बाकी में C4 है। ठीक है। So please try to remember this whole thing, maltose, sucrose, and lactose के बारे में. So this is having alpha linkage. That is why this is incorrect.
Also, maltose, it is a monosaccharide, that is obviously it is going to be a reduced in sugar, and it is going to give you 2 moles of D-glucose. We have already seen that. ठीक है, so the C option is correct. The assertion तो true है, but the reason is false. Okay, that's the answer. Now we are having polysaccharides. In what is polysaccharide? Polysaccharide, it contains a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkage. They mainly act as food storage or structural materials. अब structural materials for plants है ना, ऐसा नहीं structural materials से फिर आप घर वर बनाने लगे, that won't be happening. But structural materials, that means plant की जो trunks होंगे, branches होंगे, है ना, those things they will contain polysaccharides. And human body में they will be mainly acting as, not human but in animal kingdom they will be mainly acting as the food storage. Example is starch, cellulose and glycogen. I think you must know glycogen, that वहीं पे सारा sugar store होता है. It is in the liver, right? Next, starch की अगर हम बात करें, then starch is the main storage polysaccharide in plants, and it is the most important dietary source for human beings. Like most of the carbohydrates that we get is from the starch, and usually in the food pyramid carbohydrate is given a large area. ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कार्बोहाइड्रेट, देन हियर प्रोटीन, और फिर ऊपर में फैट है ना, बट इट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा लेना, बट स्टिल दैट्स द फूड pyramid that you must have learned from the school in lower classes. ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले बताइए तो. have you done this food pyramid thing? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ब्रेड, रोटी, चावल, नहीं? गाइस, इरम, फिया, राबिया, शाहिद, you have not seen this food Yeah. pyramid? अरे यार क्या हो जाता है तुम लोगों को, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग बीच बीच में? हाँ, अरे हाँ ना तो बोलना है बस. हैव यू सीन दिस और नॉट सीन दिस? Yes, sir. हैव सीन दिस. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? रजिता, फिया, इरम, डेबोरा, शाहिद, हो गए सब, सब सो गए लगता है. हाँ डेबोरा, यू हैव सीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट इज वाई दे आर सीन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स. और जो स्टार्च है, दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज. एक होता है अमाइलोस विच इज वाटर soluble, and one is amylopectin which is water insoluble. Now in amylose we are having only 15 to 20 percentage of starch. In amylopectin we are having 80 to 85 percentage of starch. Now let us look at amylose. What is amylose? So amylose, it is made up of alpha D glucose unit which is joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose and C4 of the next glucose. ये simple linear chain होता है ऐसे, एक ग्लूकोज फिर दूसरा ग्लूकोज इस तरह से ज्वाइन रहेगा. ठीक है. नाउ द एवरेज ग्लूकोज यूनिट दैट वी आर हैविंग इज विल रेंज फ्रॉम 200 to 1000. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज विल लुक समथिंग, ये आप इस पॉइंट पे लिख लीजिए बस, दिस इज इंपॉर्टेंट. अमाइलोज में alpha D glucose unit is joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose and C4 of next glucose unit. Alpha D glucose units joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose and C4 of the next glucose. No. And next we are having, so this is the structure. Structure basically वही same, C1 C4 के बीच में linkage है. Next is amylopectin. Amylopectin में, this is the linear thing. Amylose is just a linear thing. But amylopectin में there is branches also. So, ठीक है. So amylopectin has branch chain structure. It is composed of chain of 20 to 25 alpha D glucose unit joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C6 of other glucose unit. Glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit also exist. क्या मतलब है इसका, देखिए. So we have one ऐसे chain होगा 25-30 इसमें glucose unit होंगे, and these are joined by C1 C4. These are joined by
C1 एक यूनिट है और दूसरे का C4, इस तरह से 25-30 होंगे. देन आफ्टर 25-30 you will see that there is a linkage between C1 and C6. इस तरह का लिंकेज है, फिर से C1 C4 का लिंकेज आ गया. 25-30 इस तरह से होंगे, फिर अचानक से you will have a linkage between C1 and C6. So this is, you can see that there is branches here. Same thing you will see here. देखिए, so this is one branch और फिर ये दूसरा ब्रांच है. ठीक है. सो वन एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच में कैसे लिंकेज है? C1 C6 लिंकेज. इन द ब्रांच, जो लिंकेज है ना, इट इज C1 C4, जैसा कि एमाइलोज में था. बट इफ आई लुक एट बिटवीन द ब्रांचेस, द लिंकेज इज बिटवीन C1 एंड C6. इसको लिख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. In the branch, like if you are looking just in the branch, then it is C1 C4, but between the branch it is C1 C6. You write this down. In branch C1 C4 and between the branch it is C1 C6. ठीक है. अच्छा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, that it is made up of alpha D glucose unit, है ना. Similarly, the amylose, it is also made up of alpha D glucose. ठीक है. तो amylose को अगर आप पानी देंगे तो you will get what? If you are going to give it H2, you are going to get glucose, है ना. Similarly, if you are going to give water to amylopectin, you are also going to get glucose. तो and we have also seen that amylose and amylopectin are types of starch, है ना. तो starch को भी अगर आप पानी दीजिएगा तो you will get glucose only. The difference between amylose and amylopectin is in the percentage composition and the एक और डिफरेंस किसमें? कनेक्टिविटी, है ना. हाउ दीज टू थिंग्स, हाउ दी ग्लूकोज यूनिट आर कनेक्टेड इन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ओके. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग cellulose. Now cellulose, the food of termite is mainly cellulose. Like, अच्छा हाँ, आप लोग नहीं सुना ना, दीमक, लकड़ी की चीजों में दीमक लग जाता है. ठीक है. सो ऑल द ब्रांचेस एंड ईच एंड एवरीथिंग विच इज इन प्लांट्स, जो स्ट्रक्चरल यूनिट देता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इवन पत्ते वगैरह में भी होता है. एंड सेल्यूलोज इट कंटेन्स अगेन द सेम थिंग, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकराइड. तो दीमक उनका खाना होता है. दोज सेल्यूलोज यूनिट्स आर व्हाट? द फूड फॉर टर्माइट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे है. सो सेल्यूलोज occurs exclusively in plants and it is predominant constituent of cell wall of plant. So यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, cellulose it is used as structural material for plants, है ना. Now what it is made up of? It is a linear chain natural polymer of beta D glucose which is having a 1,4 glycosidic linkage. It is having a 1,4 glycosidic linkage and beta D glucose. So once again cellulose पे अगर आप पानी डालिएगा you will get what? Glucose. You are going to get glucose. Next, this is the structure. इसका C1 और C4 के बीच में there is a glycosidic linkage. Last है आपका glycogen, that is animal starch. The carbohydrates that are stored in animal body is known as glycogen. I mean each and every part here, ना, it is very important. इसको please लिख लीजिएगा. I remember there was a question like this, कि what is the main, how carbohydrate is stored in an animal body. ठीक है, एमसीक्यू में आया था, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली. Now the structural is similar to the amylopectin, यानी कि वही इन द ब्रांच. अगर हम ब्रांच की बात करें तो वहां पे C1 C4 लिंकेज है ऑफ व्हाट? ऑफ ग्लूकोज. एंड इफ आई टॉक बिटवीन द ब्रांच, देन वहां पे C1 and C6 लिंकेज है. बट द डिफरेंस बिटवीन amylopectin and glycogen is that the number of unit, in a branch, it is only 5 to 6. So we can see that it is highly branched. Please write this down.
Is anyone done writing? Is anyone done writing? Yes. Done? Yeah. And there are some questions. These cellulose on hydrolysis will give you what? Beta D fructose, alpha D glucose, beta D glucose, or alpha D fructose? Sorry guys, I got muted. And that's correct. You will be getting the beta D glucose unit. अब देखिए अगर किसी को याद नहीं हो ना, देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वी हैव लर्नड अबाउट स्टार्च। स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन होते हैं एंड अमाइलोज होते हैं, राइट। ये दिख रहा है, तो इसमें आप याद कर लीजिए, दिस इज अल्फा। ग्लूकोज तो सब में, ठीक है, बट दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज गोइंग टू गिव यू अल्फा डी ग्लूकोज। फाइन। नेक्स्ट, आफ्टर स्टार्च वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज देखिए सेकंड नंबर आ गया, तो बीटा कर दीजिए इसको, अल्फा के बाद क्या आएगा? बीटा आएगा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होता है इसमें। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट ग्लाइकोजन। नाउ ग्लाइकोजन इज व्हाट? इट इज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च। नाउ एज यू कैन सी, ये स्टार्च ही है ना, दैट इज व्हाई इट विल बी आल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। देखिए ऑल द थ्री आर हैविंग ग्लूकोज इन इट। द डिफरेंस इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। स्टार्च जो होगा वो तो अल्फा होगा, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च इज आल्सो ग्लाइकोजन। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज सेल्यूलोज में क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज। दिस इज कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड चैप्टर, है ना। बहुत ही कम जगह आपको यू विल सी लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्लीकेशन टाइप ऑफ थिंग्स। द ओनली एप्लीकेशन टाइप ऑफ थिंग दैट यू कैन रिमेंबर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड हाउ डिड वी कम टू दैट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाया डिफरेंट रिएक्शंस। तो उसमें रिएक्शंस याद करके यू विल आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इट इज गिविंग यू नॉर्मल हेक्सेन, दैट मींस 6 कार्बन है ना। इट इज गिविंग यू द टेस्ट्स, दैट मींस कार्बन, सॉरी, द सीएचओ ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके अलावा जनरली जो मेजर कंटेंट है यहाँ पे, दैट इज फैक्ट बेस, आपको याद रखनी पड़ेगी चीजें। नाउ मूविंग ऑन। हाँ ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वुड गिव यू व्हाट? स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? ये तो बहुत ही आसान है। करेक्ट है राम, वेरी गुड। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यस डेबोरा, करेक्ट। व्हाट हैपेंड अदर्स? बाकी लोग को नहीं आ रहा है आंसर? यस रचिता, करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट हैपेंड? फिया इज नॉट आंसरिंग शायद। नो, नो शायद, शायद या फिर आप लिख नहीं रहे हैं, आई थिंक इट इज ओनली ग्लूकोज। ठीक है, whatever polysaccharide we have learned, whether it is, फिर से बता रहे, सेल्यूलोज, सॉरी सेल्यूलोज के बारे में नहीं पता ना, पहले तो स्टार्च ही किया था हम लोगों ने। whatever polysaccharides we are learning, whether it is starch or it is cellulose or it is glycogen, all of these are made up of glucose. फर्क ये है, the first one is made up of alpha, the last one is also made up of alpha D glucose, but cellulose it is made up of beta D glucose. ठीक है, that is the only difference.
Starch and glycogen are made up of alpha D glucose and cellulose is made up of beta D glucose. So obviously starch on hydrolysis will give you only glucose. Okay. So now the carbohydrates unit is complete. We are moving towards the protein part. Huh? So protein का importance that is there. Each and every living cell, each and every animal, it is made up of each and every, like even in plants, although the content of proteins in plants is very less, it's more in the animal kingdom, but it is everything, like it is made up of proteins. One of the important component of living system is what it is, proteins. Now, what are proteins and what is the structural unit of protein? Protein में होता क्या है actually? That we have to see. ठीक है? So proteins, each and every living cell is made up of different thousands of different proteins, and proteins are high molecular mass, complex biopolymer of amino acid. So this is a component amino acid which is present in the proteins. अमीनो एसिड होता क्या है? सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, नाम ही से पता चल जाएगा आपको, अमीनो एसिड. अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा, दैट मींस व्हाट, यू विल हैव NH2 ग्रुप एंड यू विल हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH. ठीक है. एक कार्बन में अगर अमीन लगा हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमीनो एसिड. तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमीनो एसिड. ध्यान रखिएगा एक चीज, सिंपल से एक्रोनिम से यू कैन रिमेंबर दिस, दैट ये जो है पूरा कार्बन एटम, उसमें एक अमीन लगा होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देयर विल बी सम अल्काइल. नॉट, ये तो हर अमीनो एसिड में होगा, द अमीन ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. बट depending on this R group, we will classify, there are different types of amino acids. ठीक है. याद करने के लिए बहुत ही आसान है, कॉर्न याद कर लीजिए. ठीक है. So amino acid contains carboxylic acid, alkyl group and NH2 group. ठीक है. So this is the basic formula of what amino acid. इसको please लिख लीजिए, this one. This whole slide you can write it down, and also you can write the acronym, the mnemonic to remember it. COR. Carboxylic acid group will be present, alkyl group will be present, and NH2 will be present. Those who are attending this class now, I will assure you guys, revision में आपको बहुत आसानी होगी. आपने मतलब minimum effort इस particular class में डाला है, but you will see that it is going to benefit you a lot when we are revising things. हाँ, बस रिविजन से पहले ना आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा और थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द क्लास इटसेल्फ. ओके. बहुत कम एफर्ट लगेगा, बट हाँ, जब हम लोग रिविजन करेंगे उस टाइम यू विल हैव टू पुट एफर्ट, बिकॉज यू हैव टू ओनली रिमेंबर थिंग्स. सो वाइल रिविजन वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग ना, तो वहां पे आप लोग अच्छे से एफर्ट डाल के बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना के जो हम बोल रहे हैं उन चीजों को सुन के आप लोग तैयारी कीजिएगा. एंड एग्जाम में, बस एग्जाम में आपको लिखना है और वापस आना. There are some conceptual questions जिसको हम डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल इस चैप्टर के अंदर यू विल नॉट हैव टू मेनी थिंग्स टू अप्लाई ऑन, है ना. बहुत सारी लॉजिकल चीजें नहीं है, देयर आर फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट इज व्हाई बायोकेमिस्ट्री इट इज अ सब्जेक्ट जो आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे फिर बाद में एप्लीकेशन आएगा. तो अभी आप ABCD पढ़ रहे हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो वो तो रटना पड़ेगा आपको. बाद में पता चलेगा आपको, अच्छा बी बॉय से स्टार्ट होता है तो अ बॉय बोलेंगे, एन ओल्ड मैन बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर द एप्लीकेशन, वो आपको बाद में आएगा बहुत ज्यादा. बट राइट नाउ यू आर जस्ट लर्निंग द ABCs ऑफ बायोकेमिस्ट्री. Now, moving on. I hope you have written this down. So as we said, the difference in this alkyl group will give you different amino acid. है ना, अलग-अलग alkyl group रहेगा तो aliphatic amino acid आपको मिलेगा. So yeah, R is alkyl, aryl, or any other group, but never contain unstable strained cyclic cycles or functional group.
तो अल्काइल ग्रुप होगा वहां पे, इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी फंक्शनल ग्रुप वहां पे नहीं और कोई मौजूद होगा, है ना, बट इट कैन, मतलब एक ऐसा बड़ा सा कोई अल्काइल ग्रुप होगा उसके अंदर हो सकता है कुछ फंक्शनल ग्रुप, बट डायरेक्टली देयर विल बी नो फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, है ना। हाँ देखिए, सिंस वी आर हैविंग इन द सेम कार्बन एटम अमीनो एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, हाँ सीधी सेम कार्बन, इसी कार्बन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दी NH2 ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एडजेसेंट वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। और अल्फा ही में जब NH2 लगा हो तो अल्फा अमीनो एसिड। But if we have a certain compound in which carboxylic acid is connected to a carbon, इसको alpha carbon बोल दिए, next carbon will be beta carbon, and if that carbon is connected to NH2 तो इसको बोलेंगे beta amino acid, और अगर इसके बाद वाले कार्बन में लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे गामा अमीनो एसिड, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ अमीनो ग्रुप in the chain, these are classified as alpha, beta, and gamma. We have to learn only about the alpha amino acid, but classification आपको जानना जरूरी है ना। Please also write this down. This line you will write on the basis of position of amino group. This is important, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इसमें जो कार्बन लगा रहेगा उसको हमेशा अल्फा बोलेंगे, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। प्रायोरिटी लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड इज एट द हाईएस्ट, so alpha carbon will be decided on the basis of that priority itself. एक functional group कौन सा है यहाँ पे, so functional group is carboxylic acid. The carbon adjacent to carboxylic acid is alpha, adjacent to alpha is beta, adjacent to beta will be gamma. और डिपेंड करेगा, if NH2 is in alpha, alpha amino acid, if NH2 is in beta, then beta amino acid, if it is in gamma, then gamma amino acid, and so on. फिर डेल्टा वगैरह भी आ जाएगा, but this is the basis of classification, position of the amino group. I hope you have written this down. No. Uh, there are approximately 20 amino acids in the living system. Okay, no, 20, 21 भी होता है, 23 भी sometimes people say, but there are 20 main amino acid that majorly completes the living system. ठीक है, now we have to learn those 20 amino acid. वो अभी आपको नहीं करना, अभी बेसिकली कुछ कुछ चीजें आपको पढ़नी है, then as this exam will come sooner वहां पे फिर हम और भी आपको याद करवाएंगे, ठीक है। राइट नाउ बिकॉज आई वुड रियली सजेस्ट दैट रिमेम्बरिंग द अमीनो एसिड वो 1 मार्क्स का आएगा, इसके लिए आपको 20 अमीनो एसिड के नाम याद करने पड़ेंगे। So rather than giving all the efforts of remembering and memorizing 20 amino acid with their structure, it is better कि अभी hold it down and when the exam will come near वहां पे अच्छे से रट के जाइएगा और लिख के बस आ जाइएगा, ठीक है। बिकॉज उसका कोई और एप्लीकेशन है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है दैट इफ यू आर रिमेम्बरिंग दी 20 अमीनो एसिड तो आपको बहुत अलग अलग सवालों में काम आएगा। इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन वन क्वेश्चन, दे हैव गिवन द नेम ऑफ अमीनो एसिड एंड यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज इट। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपका स्ट्रक्चर और नेम को याद करने के लिए, ठीक है। सो होल्ड इट डाउन, राइट नाउ यू कैन जस्ट, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालिए, बट हाँ उसको एक नजर से जरूर लेके चलिएगा। नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट all the naturally occurring amino acid have L configuration at the alpha carbon except glycine. Glycine is actually achiral because glycine के पास एक देखिए कार्बन एटम है, इसके पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक तो NH2 ग्रुप होगा, राइट। देयर विल बी वन हाइड्रोजन एंड इट इज नॉट हैविंग अल्काइल ग्रुप, कार्बन ग्रुप नहीं है वहां पे, इसमें एक हाइड्रोजन आ जाता है। So since it is hydrogen and hydrogen, there are two same group in one carbon atom. Carbon atom ये क्या हो जाएगा, achiral हो जाएगा, it will not be chiral. Chiral के लिए क्या, what is the condition for chiral? All the 4 groups attached to a carbon atom should be different. But यहाँ पे hydrogen is same, that is why it will not be chiral, it is achiral. That is why it is not L या D, कुछ भी नहीं होता है. But all the naturally occurring amino acid are what they are having L configuration, and this is LEO. ठीक है, it is not small l. स्मॉल एल का मतलब दूसरा होता है ना, स्मॉल डी एंड एल जो हम लोगों ने पढ़ा बायोमोलिक्यूल में, इट जस्ट सेज अबाउट दी, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है दैट द पेन अल्टीमेट कार्बन एटम उसके पास OH राइट में है या उसके पास OH लेफ्ट में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है DL एन कॉन्फिगरेशन, द स्मॉल डी स्मॉल एल, बट द कैपिटल L इट रिप्रेजेंट्स लेवो रोटेटरी, द कैपिटल D रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
ठीक है. So all the amino acids that we are having, they are what? They are in L configuration. Now moving on. अब देखिए एक चीज को, अगर हम बात करें अमीनो एसिड के नेचर के बारे में, then based on the functional group present, based on the functional group present, it can be classified as neutral, acidic and basic. कैसे? ध्यान दीजिए जरा. If the number of carboxylic acid present is equal to the number of amino group, तब तो न्यूट्रल हो जाएगा. But if the carboxylic acid that is present is more than the amino acid, यानी जो alkyl group है वहां पे भी carboxylic acid आ जाए. So there we are having more than one carboxylic acid ना, एक तो अमीनो एसिड में होता है और फिर अल्काइल ग्रुप में एक और आ गया. ठीक है. सो एट दैट केस वी आर हैविंग एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड विल बी हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड लेस देन द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप. तो वहां पे अमीन्स ग्रुप ज्यादा होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड कम होगा. ठीक है. मतलब देखिए ज्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा. देखिए COH होगा एंड NH2, दिस विल बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी, और एक हाइड्रोजन, ये सब में होगा. But let us suppose यहाँ पे आपके पास there is some alkyl group and this alkyl group contains COH. तब तो कितने COH हो गए? There are two carboxylic acid and only one ammonia, है ना, only one amino group. So carboxylic acid is more, तो acidic हो जाएगा. But if this R group, it does not contain carboxylic acid but rather contains NH2 group. Alkyl group is not the amino group. Alkyl group के अंदर amino group आ जाए तब हो. Alkyl group कभी भी amino group नहीं होगा, but alkyl group के अंदर, the alkyl group can contain amino group. Then in that case, the amino group will be more or carboxylic acid group will be less. It will be basic amino acid. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Conceptually, yes or no? कब acidic होगा, कब neutral होगा, कब basic होगा? Yes or no? Please tell me, guys. Iram, Deborah, Priya. Yes. Yes, Yes. Rajita. ठीक है. इसको लिखिए जरा. ठीक है. ध्यान दीजिए जरा. If the R group, if the R group contains carboxylic acid, तब क्या हो जाएगा? Acidic. If the R group is containing NH2, तब क्या हो जाएगा? Basic. If the R group is neither containing carboxylic nor NH2 group, then it will be neutral, है ना? It is only dependent on the alkyl group. So if you see the first amino acid, it is glycine, जिसमें साइड चेन में क्या होता है? हाइड्रोजन. ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना ही यहाँ पे NH2 है. That is why it is neutral. Similarly, alanine, alanine is just having CH3 as the alkyl group, है ना? ये alkyl group की बात हो रही है. बाकी सारे कंपोनेंट तो सेम है ना. ये चीज बार बार हम कह रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा. दिस कंपोनेंट इज ऑलरेडी सेम, बस चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं ना. यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, so ग्लाइसिन. यहाँ पे CH3 रख दीजिए, then it will be alanine. Here if you put CH3 whole twice, then it will be valine. CH2 CH3 whole twice, then it will be leucine. In all of these cases, but you can see there is neither NH2 group nor we are having any carboxylic acid, so all of these are neutral. Similarly, if you see isoleucine, phenylamine, cysteine, so all of these are also not containing any carboxylic acid group or amino acid or carboxylic acid group or the amino group, and or the NH2 group. That is why these are also what? Neutral. Similarly, if you see CH2 CH2 S and CH3, tryptophan. Now अब यहाँ पे देखिएगा, अब सर tryptophan में तो नाइट्रोजन है, but the important thing about this nitrogen atom is that it is taking part in resonance, है ना? A double bond B single bond C, and C is having a negative charge, so it can move here and this pi bond can move here, right? And then when this pi bond moves here, this pi bond can move here. So this particular electron, the lone pair on nitrogen atom, is the reason for the basic character, that it has a tendency to give electrons. Lewis base है ये, because it has tendency to give electron.
But when this electron is not available to nitrogen, that means this electron is revolving, it is delocalized. वो localized नहीं है, nitrogen के ऊपर नहीं है. This electron is delocalized over whole compound, इस तरह से. तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं बचा ना, उसका लोन पेयर काम पे लगा हुआ है. So if the lone pair itself is working, then how it is going to show any basic behavior? That is why even tryptophan, ये सवाल आ सकता है ना, even you can say tryptophan contains NH, या फिर it contains nitrogen in the ring, but still it is not basic. You will say what is the reason? Because of resonance. The electron of nitrogen is delocalized and not available for the donation. Okay, that is why it does not act as Lewis base. Now, there are some more neutral amino acid, aspargine, glutamine and threonine. अभी आपको बस ये देखना है. अच्छा, यहाँ पे आप बोलिएगा सर, यहाँ पे फिर से you are going to have resonance. You have CH2, C double bond O, and then you are having NH2 ना. यहाँ पे देखिए, this is lone pair. So A double bond B, single bond C. So this lone pair will go here, and this negative charge will go here. So this nitrogen atom NH2 is also under resonance. That is why, अच्छा, I mean the main structure क्या होता है इसका? इस तरह के कंपाउंड का you will have like this structure. There is partial double bond here, partial double bond here, and oxygen. ठीक है? तो partial double bonds is present only because of what? Only because of the lone pair of nitrogen atom. That is why here in aspargine and glutamine also we are not having any kind of acidic or basic behavior. Basic behavior नहीं है, even though it is having NH2 group. Up, you will see even some more. For example, see here. टायरोसिन में क्या है आपके पास? टायरोसिन में तो कुछ नहीं है, बट देयर इज प्रोलीन. दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रोलीन में यू हैव वन NH ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो जो आपके पास अमीनो एसिड, जो मेन अमीनो एसिड होता है ना, दिस स्ट्रक्चर NH2 कार्बन एंड COH. तो यहाँ पे दिस NH2 इज न्यूट्रलाइजिंग दिस COH, एंड प्रोलीन के अंदर दिस NH इज न्यूट्रलाइजिंग दिस COH. As you can see, there is no double bond, तो conjugation का सवाल ही नहीं है, and you will not have any kind of resonance here. Both is NH का electron is available for bonding, and this carboxylic acid का hydrogen it is available for liberation. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक NH और COH आ गया. That is why you are not going to have any acidic or basic behavior. Proline के ऊपर भी सवाल आ सकता है, that proline contains one carboxylic acid group, but it is neutral amino acid. Why? You will see that because it has NH in the ring also. ठीक है. Now let us see some acidic amino acid. Acidic amino acid में सिर्फ दो हैं आपके पास, aspartic acid and glutamic acid. Aspartic acid में होता है आपके पास CH2COH, glutamic acid में होता है आपके पास CH2CH2COH. ठीक है. So it is, देखिए, कुछ अमीनो एसिड को ना ऐसे याद करना ज्यादा आसान है. आई थिंक इफ यू रिमेंबर एसिडिक अमीनो एसिड, तो आपका एक MCQ हो सकता है, राइट? And which of the following is acidic amino acid, right? So aspartic and glutamic स्ट्रक्चर अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट. तो एस्पार्टिक एसिड के लिए आपको बस क्या याद करना है? इन दोनों को साथ में याद कीजिए, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. एस्पार्टिक पहले आ रहा है तो एक CH2, ग्लूटामिक बाद में आ रहा है तो दो CH2, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके अंदर है. ठीक है. सो ट्राई टू रिमेंबर दी एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. अभी कम है ना, दो है. यू कैन रिमेंबर. देन रिमेंबर द बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है. बेसिक अमीनो एसिड में यू हैव आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन. आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स आर अ बिट डिफिकल्ट for basic amino acid, but still सिर्फ तीन है, so you can practice it and remember. अब यहाँ पे if you see here, you're having this NH and this NH group which are going to show resonance यहाँ पे, but there is one NH group which is not going to show resonance, which is this one. इसका जो लोन पेयर है ना, it is not going to show any resonance. यहाँ पे आपके पास जरूर resonance होगा. In the previous cases, this amino acid, it is going to move here, and this pi bond will move here. Similarly, this is going to move here, and this pi bond will move here. So as we can see, this nitrogen atom is always getting electrons. इसके पास अभी तो दो इलेक्ट्रॉन हैं ही, इसके बाद भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. So this electron, the lone pair electron of this nitrogen doubly bonded will be always available. ठीक है. Similarly, यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम है, इसका लोन पेयर हमेशा अवेलेबल रहेगा. यहाँ पे तो आपके पास कॉन्जुगेशन है ही नहीं, there is no delocalization of electrons here. ठीक है. So this is what? This are the basic amino acid, that is arginine, histidine and lysine. Arginine, histidine and lysine. AHL करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं. ठीक है. Now, आज के लिए इतना ही, because we are having a test after half an hour. ठीक है. So I will leave you guys. आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए टेस्ट के लिए. So we are done till basic amino acids. ठीक है. तो स्लाइड नंबर 150, 149 है. So 150 तक आपको भेजना है.
ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, थोड़ा डिटेल है न्यूट्रल में, क्यों न्यूट्रल होता है नहीं होता है, इक्वल नंबर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इफ इक्वल नंबर ऑफ NH2 इज प्रेजेंट, if more number of carboxylic acid are present compared to NH2, then it is going to be acidic. If more NH2 is present, then it is going to be basic. Okay. Then in this slide, I will tell you guys how to remember the amino acid. Then this is also already we have seen that all are having L configuration at the alpha carbon except glycine. Next on the basis of synthesis, ये ज़्यादा important है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो ज़्यादा अच्छा है. So we have learned till the classification of amino acid according to the acidic basic behavior. ठीक है, चलिए. So that is it for today. Let me just escape here.